Assalamu alaikum, dear healthcare professionals. This is the second lecture today. In previous lecture, we discussed about the multiple choice questions and their types, like what is the A type, what is the R type. We also discuss the Miller parameter of clinical competence or the Miller prism. Today, in this session, we will discuss about some other methods of assessment for the undergraduate students of the health sciences, and in that we will start from the key features question. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात की थी, इस बात का जिक्र किया था कि फीचर क्वेश्चन जो हैं ये क्लोज एंड भी हो सकती हैं और ये ओपन एंडेड भी हो सकती हैं। यानी ये एक ऐसा टाइप्स ऑफ असेसमेंट है कि जिससे जो बाउंड्री पर है कि नहीं, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो सारे के सारे क्लोज एंडेड थे और इसके बाद जितने भी आएंगे वो सारे के सारे ओपन एंडेड होंगे। एंड दिस वन द की फीचर क्वेश्चन जो है, दिस इज कैन बी ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड दैट मे बी ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। की फीचर क्वेश्चन की जो प्रॉपर्टी हैसियत ये है कि ये उस सिनेरियोज के लिए यूज की जाती हैं जहां पर स्टूडेंट्स से जो क्लिनिकल उसकी स्किल्स होते हैं या जो क्लिनिकल सिनेरियोज या जो वेनिटीज या एक स्पेसिफिक सिचुएशन जो है वो असिस किया जाता है कि क्या करेंगे उस टाइम पे। सपोज एक पेशेंट है और उसको ये कंडीशन है और अचानक उसकी कंडीशन में थोड़ी सी जो है चेंज आ गई और वो एक सिम्टम जो है थोड़ी सी उनकी एग्जैजरेट हो गए, तो उस टाइम पे आपकी डिसीजन क्या होगी। सो ये जो क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग है, ये जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को जो डील करें, किस तरह करेंगे, क्या डिसीजन लेंगे, ऐसे इस केस के लिए जो की फीचर क्वेश्चन है, दिस इज one of the most vital assessment method. So these key feature questions, they are short clinical cases or scenarios which are followed by questions and by the key features are essential decision of the case, जैसे हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया। और इसमें ये होता है कि एक केस होता है और उस केस में से फिर उसको में एक चेंज लाया जाता है और उस चेंज के बाद जो है ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग अगर किसी की अच्छी हो और किसी की तो प्रीवियस नॉलेज जो है अच्छी हो, किसी की जो है वो करस्पॉन्ड करेंगे केस के साथ, तो उसकी डिसीजन पावर जो है ये सही है कि गलत है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी जो है पूछा जा सकता है। एंड दैट मे बी एन ओपन एंड क्वेश्चन दैट व्हाट विल बी योर ओपिनियन, व्हाट विल बी योर डिसीजन, व्हाट विल बी आपकी चॉइस क्या होगी, तो ये ओपन एंडेड भी हो सकती है। एंड दैट मे बी सिलेक्शन फ्रॉम ऑप्शंस। More than one correct answer can be provided as if this is the priority level पे कि this is the first decision and if उसके बाद ये भी हो सकता है, उसके बाद ये। तो unlike the multiple choice question, here the students can take a number of options, they can write a number of options। एग्जाम्पल्स हम इसके डिस्कस करेंगे अभी। चूंकि ये की जितनी भी ये की फीचर क्वेश्चंस होते हैं, ये क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग जो है या प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को असेस करते हैं। दैट्स वाई इसकी कंस्ट्रक्शन जो है ये बहुत केयरफुल होनी चाहिए और स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं, उसी गाइडलाइंस के मुताबिक इसको कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। इंशाल्लाह अब इसमें एक we will discuss the guidelines as well, and we will discuss the multiple choice question for different assessment। लेकिन चूंकि एक ये वाला जो है ये की फ्यूचर क्वेश्चन ये अमूमन हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में इतना ज्यादा जो है उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता, तो ये इसलिए इसमें एक्सपर्टीज जो है बहुत कम है इसकी। एंड दैट्स वाई इसकी बनाने में टाइम भी ज्यादा लगेगा बीइंग अ टीचर, और इसमें फ्लॉस जो है ये भी हो सकते हैं। और फिर इसमें इसे क्वेश्चन बनानी चाहिए जिसकी वैलिडिटी और रिलेबिलिटी जो है ये अच्छी हो। और वैलिडिटी एबिटेस्ट और रिलेबिलिटी एबिटेस्ट क्या है? Validity, which simply we can call as the face validity. Basically, there are many types of the validity. This is construct validity, content validity, split half validity, uh, face validity. So almost there are more than 10 types of validity. यहाँ से मोस्टली जो हम देखेंगे दैट विल बी द फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी का मतलब ये है कि
ये जो टेस्ट या प्रोसीजर है, जिस पर्पस के लिए, यानी जो असेस करना चाहते हैं क्या उससे असेस हुआ है कि नहीं। जिसके लिए ये इज्यूम किया था कि हम ये असेस करना चाहते हैं, अगर वो इसे असेस हो रहा है, इट मीन इट इज अ वैलिड असेसमेंट क्वेश्चन, इट इज अ वैलिड असेसमेंट, इट इज अ वैलिड टेस्ट। और रिलायबल का मतलब ये है कि बार बार अगर हम ये करेंगे तो एक स्पेसिफिक टाइम में ये आंसर देगा स्टूडेंट जो है, या उसके आंसर जो है इसमें there will be a definite and similar time for again and again solved by different। तो readability जो टेस्ट की है, that is on the basis of time required for the solving that question। so इसीलिए ये क्वेश्चन जब बनाते हैं, so there should be carefully constructed, keeping in mind the validity and readability। जैसे हमने कहा कि चूंकि ये बाकी टाइप्स ऑफ असेसमेंट या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है उसमें इसकी तरह ये इसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है, and that's why many of the teachers mostly they are unknown, they are unaware of this type of question, that what the key feature question are, and that's one of the reason why it will be a time consuming, and it will be prone toward the biasness and prone toward the different types of एक एग्जांपल है, you are a general practitioner, yesterday you made a house call on Mr. ABC, and from your history taking and the physical examination, subjective examination, both objective and subjective examination, you reach to the decision, you diagnose that it is anaphrolithiasis, which means there is a kidney stone. You give an intramuscular injection of 100 mg of diclofenac, and you left him some diclofenac suppositories as well. You also advise him to take one when in pain, but not more than twice a day. But today, he rings you at 9 a.m. He still has pain attacks, which respond well to the diclofenac. But since 5 a.m., he has also had a continuous pain at the right side and also has a fever. Now, this situation is changed from that situation on the day when he was assessed by you. So the question is, what is the best next step from the following, looking into this recent condition, when he have that will response to a diclofenac, but still he has previously it was on the left side, but now he has pain also on the right side, and he is also have some temperature as well. So looking into this situation, what will be the decision of the student? Ask him to wait another day to see how the disease progress, prescribe broad spectrum antibiotics, refer him to hospital for intravenous pyrograph, or refer him urgently to a urologist. So what will be the students will just take one or more than one answer, which should be the correct one from these following. So this is an example of the key feature question of MCQ type. If the options they are not present here, like the A, B, C, D, which are present in this slide, you can see the option in this slide, they are not present, and only this is the question of what will be the best next step regarding to you, and then the student have to write what will be the best option. So this key feature questions, there can be open-ended question, and there can be multiple choice question like this. Now let's come towards the open-ended question, and open-ended question we will discuss 4 type of assessment. One is that short answer question, then the essay question, modified essay question, and then the last is CT will be discussed in the end. These 4 type of assessment, they all are the open-ended assessment methods. These are open-ended questions that require student to generate an answer rather than to select from a fixed number of options like we discussed in the 3 previous methods. Since they require some time to answer, not many short answer questions can be asked in an hour of testing time, which and this point, this characteristic, this led to the that decreased reliability of the short answer question. पर आवर टेस्टिंग इसकी बहुत कम होती है। एक तो हम उसकी एक घंटे में उसके जो आंसर्स है ये हम लिमिटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज if a person can have only required 5 minutes for a short answer question, so we can't ask more than
10 questions or more than 12 questions in 1 hour, as the average time would be 6 questions or 5 questions, 5 minutes or 6 minutes. On the other hand, in 1 hour, you can ask multiple choice question up to 40 to 50. If we compared this 10 to 12 or 10 to 15 short answer question and to 40 to 50, so that is we can't we will have a limited sampling, and this limited sampling may also lead to will affect the reliability of these tests. Second disadvantage for the short answer question, which was actually an advantage for the MCQs, कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ये एक कंटेंट एक्सपर्ट या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही चेक कर सकता है, जबकि एमसीक्यू के लिए से कोई कंटेंट स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं होती है। और इसी वजह से ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करना होता है, उनके लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर हम आज की केमयू की हालत देखें, देयर आर मोर देन 100 affiliated institutes with KMU, और अगर इन 100 इंस्टीट्यूट की क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट आंसर उसमें फॉर्मेट में होते, तो केमयू के लिए ये बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो क्या करते कि सारे टीचर्स को बुलाते और सारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट के पेपर जो है और टीचर्स से यहाँ से शॉर्ट आंसर चेक कर लेते। इसके लिए बहुत सारे मैनेजमेंट की जरूरत होती, जो बहुत डिफिकल्ट होता है, एंड डिफिकल्ट के साथ साथ बहुत कॉस्टली भी होता। देयरफॉर ये फॉर्मेट तभी यूज करनी चाहिए व्हेन other close-ended questions they are excluded in that exam. These questions may be subject to less reliability if different markers marks the same question of a single group. और ये एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर सपोज किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स है और उस 100 स्टूडेंट्स में से एक टीचर जो है 50 पेपर चेक करता है, दूसरा टीचर जो है ये 50 पेपर चेक करता है, तो यहाँ पर डिफरेंट मार्कर्स जो है उन्होंने कुछ पेपर को चेक, तो उससे क्या होगा, ये उनकी मार्किंग भी ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस। शायद अगर एक बंदा वो थोड़ा सा ज्यादा लीनियंट है मार्क्स गिविंग में, तो उसको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे स्टूडेंट को, उसके असेसमेंट रिपोर्ट अच्छी आएगी। On the other hand, if a person who is known for the strict checking, though the student will have one of the best answer in the papers, but still उनको marks जो है बहुत कम मिलेंगे as compared to the previous one the teacher check करे। That's why this is one of the drawback if it is there. So each question of all the students should be checked by a single teacher. अब अगर ये है कि एक टीचर को 100 पेपर चेक नहीं कर सकता, तो अगर यहाँ पर 6 क्वेश्चन है तो इस तरह की होनी चाहिए कि 1 2 3 यानी पहले 3 क्वेश्चन जो है उस 100 स्टूडेंट्स की एक टीचर चेक करेगा, एंड द नेक्स्ट 3 क्वेश्चन दैट इज द 4 5 6 क्वेश्चन दैट विल बी चेक्ड बाय द सेकंड टीचर ऑफ ऑल द 100 स्टूडेंट्स। तो उसमें अगर एक लीनियंट है तो सबको लीनियंसी होगी, अगर एक बंदा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते तो सबके लिए स्ट्रिक्ट होगा, तो उससे जो रिलेबिलिटी है ये थोड़ी सी हाई आएगी, थोड़ी सी बरकरार आएगी। और अगर सूरत यही रही कि एक ही क्वेश्चन जो है बास स्टूडेंट के लिए एक टीचर चेक करता है, बास के लिए दूसरा एग्जामिनर चेक करता है, तो दैट विल लीड टू द लेस रिलेबिलिटी ऑफ द मार्क्स, व्हिच विल अगेन बाइस्ड असेसमेंट भी हो सकती है। इसके लिए एक और बात बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चन है it should be concise, it should be unambiguous and should be clearly written. और इसके साथ साथ जो है जब एग्जामिनर पेपर चेक करने जाता है तो पहले से उसके पास एक स्ट्रक्चर की होनी चाहिए। समटाइम्स वो स्ट्रक्चरिंग हो जाती है, लेकिन उसमें ये केस की क्यों जरूरी है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, स्पेसिफिक आंसर जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स उसके पास होने चाहिए। दो उसमें किसी ने उसको किसी भी फॉर्मेट किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में लिखो, लेकिन वो पॉइंट जरूरी है कि उसमें प्रेजेंट हो, चाहे किसी ने थोड़ी सी डिटेल के साथ लिखे हैं, किसी ने बुलेट फॉर्म में लिखे हैं, किसी ने सेंटेंस फॉर्म में लिखे, दैट डजंट मैटर बट द पॉइंट शुड बी देयर। तो ये जो है आंसर की जो है क्वेश्चन मार्क करने से पहले पहले एग्जामिनर के पास होनी चाहिए। अब एक और भी इसकी रिलेबिलिटी हम किस तरह जो है ज्यादा कर सकते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की, अगर
टाइम है या टाइम के साथ साथ जो है एग्जामिनर की तादाद ज्यादा है, तो देयर शुड बी डबल मार्किंग। डबल मार्किंग का मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन जो है ये दो टीचर चेक करें। तो डबल मार्किंग की एक स्पेसिफिक टाइप होती है विच इज नोन एज द डबल ब्लाइंड मार्किंग। ये एक स्पेसिफिक टाइप आप डबल मार्किंग, उसमें ये होता है कि एक टीचर को ये नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन जो है दूसरा टीचर भी चेक कर रहा है, यानी उसमें ये टीचर ए एंड टीचर ए इज नॉट अवेयर दैट द सेम क्वेश्चन इज बीइंग आल्सो चेक्ड बाय द या इज आल्सो बीइंग चेकिंग बाय अनदर टीचर बी। और अगर उनको पता है कि ये क्वेश्चन जो है चेक कर रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स का नहीं पता कि टीचर बी ने इस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए हैं स्टूडेंट के लिए, अगर उसको ये नहीं पता तो स्पेसिफिक टाइप होती है विच इज एक्चुअली नोन एज द डबल ब्लाइंड मार्किंग। बाज़ अवत इस तरह होता है कि एक टीचर जो है एक पेपर चेक कर लेता है, उसके मार्क्स जो है ये दे देता है, और फिर मार्क्स देने के बाद वही पेज जो है ये उसके पास लेके जाते हैं कि इसको 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 चेक किया जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो ऑलरेडी मार्क्स दी होती हैं, तो उस मार्क्स को देखते हुए उसके हक में फैसला दे सकते हैं टीचर के हक में। तो दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम द डिसीजन बाय द सेकंड टीचर may be biased। तो if it is the double blind marking, तो इससे reliability as compared to the double marking और भी बेहतर हो जाएगी और भी ज्यादा हो जाएगी। And each marker should mark the same question for all the candidates as we discussed in the previous slides। और इससे होता है कि that will lead to the reliable scores than if each marker marks all the question of one group of candidates while another marks all question of another group। ऐसे questions they are just similar to the short answer question, but the information required from the students from the candidate that will be more। इसके मार्क्स ज्यादा होंगे, उसके लिए टाइम ज्यादा होगा, और उसकी जो क्वेश्चन जो है उसमें पार्ट्स हो सके, यानी देयर शुड बी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 या ये तीनों पार्ट्स जो है दे आर द पार्ट्स ऑफ ए सिंगल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन दे आर यूज्ड व्हेन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस, समराइज, इवैल्यूएट, सप्लाई और रिप्लाई इंफॉर्मेशन टू न्यू सिचुएशन। उसमें जो है एक न्यू सिचुएशन, मिसाल के तौर पर जैसे पहले हमने एक की फीचर्स देखा कि इस तरह के सिचुएशन दी जाती है और उसको कहा जाता है कि राइट डाउन द डिटेल व्हाट वी विल डू, या राइट डाउन द डिटेल ऑफ दिस वन। तो आप अपने अल्फाज में जो है बीइंग ए स्टूडेंट जो अपने अल्फाज में डिटेल से उसके आंसर लिखेगा। They require much more time as well as from the short answer question to answer than multiple choice question, and therefore not quite as many questions can be used for our up testing. Hence, their reliability is much lower than the multiple choice question as well as from the short answer question. Structuring that of the marking process and using a correction scheme similar to one used for shadow question can improve the reliability, but there should be no structuring because uh, over structuring simple we can call as very strict checking। over structuring से मुराद ये है कि आप इतने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देते हैं कि उसके मिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसलिए स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। लेकिन ओवर स्ट्रक्चरिंग जो है इससे ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की असेसमेंट जो है थोड़ी सी वो नेगेटिव आ जाएगी, विच विल मेक द सिचुएशन मच वर्स फॉर द स्टूडेंट्स। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अप्लाई आल्सो टू द ऐसे क्वेश्चन, और गाइडलाइंस हमने थोड़ी सी कि देयर शुड बी कंसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। फिर टीचर्स के साथ पहले से एक की होनी चाहिए, स्ट्रक्चर की होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, और टाइम के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन मांगी गई हैं। आप सपोज आपने स्टूडेंट से कहें कि write down all the treatment which is used for the nephrolithiasis, or you have given the time 2 minutes, so it is very difficult to write a number of options, the number of detail of the treatment protocol within 2 minutes। so ये जो है that is against the guidelines। The third type of the open-ended assessment method for the assessing the knowledge of the undergraduate students of the health sciences is the modified essay question, which is also known as the MEQs। MEQs, there's a special type of essay question that consists of a case followed by a series of questions that relate to the case and that must be answered in the sequence asked। All the questions, there would be
asked from the scenario which is being described earlier in that on the top. These MEQs that leads to question interdependency, and a student answering the first question incorrectly is like to answer the subsequent question incorrectly too. मिसाल के तौर पर सपोज एक सिनेरियो दी जाती है और उस सिनेरियो में पहला क्वेश्चन ये किया जाता है कि व्हाट इज द पॉसिबल डायग्नोसिस. The second question is what is the differential diagnosis? Write at least 3 other possible diagnoses for this patient. What is the etiology of this diagnosis? And the fourth question is write down the treatment protocol for this patient, for this diagnosis. What we mean from the interdependency, all these questions that depend on each other, there is a link between them, they are interlinked, there is a consistency between the questions. And if a student they write the answer of the first question a wrong option, wrong answer लिख देते हैं, wrong diagnosis लिख देते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखेगा, उसी डायग्नोसिस जो उसने गलत डायग्नोसिस दी कि उस गलत डायग्नोसिस के मुताबिक वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखेगा, उसी पहले क्वेश्चन के मुताबिक फिर उसकी etiology लिखेगा और उसी डायग्नोसिस के लिए वो ट्रीटमेंट भी लिखेगा. अब अगर उसने पहला डायग्नोज गलत किया है तो उसके सारे क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो भी गलत कंसिडर हो जाएंगे. दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ दिस, ड्रॉबैक भी है एंड दिस सेंसिटिविटी भी है इसकी, which make it very sensitive that critical thinking and meta thinking जो इसके जरूरी है कि स्टूडेंट जो है उसको केयरफुल जो है उसको पहला आंसर जो है सोचने के बाद वो लिखेगा, यानी केयरफुल रीडिंग, केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग जो है इसके बाद उसको पहला ऑप्शन लिखेगा और उसके बाद बाकी वो डिजाइन करेगा. So this means therefore this lead to a question and a dependency, and a student answering the first question incorrect is like to answer the subsequent question incorrectly too. Therefore no review or possibility of the correcting previous answer is allowed, otherwise that will create some biasness in the answers and the assessment reports. The students are provided with a limited amount of patient data which is in and through the base of which the question will be constructed and then asked to write a brief answer to a question. Such question may relate to history taking, the examination findings, diagnosis, investigation, treatments, and so on, the rehabilitation, and so on. A well-written modified essay question assists the approach of student to solve the problem, their reasoning skill, and their understanding of concepts rather than recall of the factual knowledge. And this type of question, according to the Miller, these questions should be asked if you are trying to assess the clinical competencies of the students rather than just what they know and how they know. Due to the psychometric properties are problems that simply mean the reliability and the validity of a procedure, the validity of a test. We can call the reliability and the validity as the psychometric properties of a test or procedure. So due to the psychometric problems associated with the question and dependency, MEQs are being replaced by the key features question, as they have the lesser reliability and validity as well. So that's why the best option to ask the question a reliable method, which is the key features question. For example, there's a question. Mr. A tells you that she had some. Mr. A tells you that she has had keta for years, and that in the last 2 months she has had headache made worse by the blowing her nose. Keta, that simple mean we can say that the inflammation of the mucosal membrane, mucosal membrane, which will lead to the abundantly presence of the mucus, especially in the nose. But the person after 2 months, she has a headache as well, which will make worse the blowing of her nose. The headache intensity of the headache increases
with the blowing up her nose. The question is, what two common diagnoses might you consider to be the most likely at this stage when the headache is being worse by blowing her nose? And giving three symptoms or signs associated with each diagnosis. If the student they write the wrong option, if they write the two common diagnoses, wrong diagnosis, obviously the signs and symptoms those will be automatically wrong. This is the last and the most unique and the least using essay question, the open-ended question used for assessing the knowledge of the undergraduate students of the health sciences. This is the script concordance test, shortly known as the SCT. This is a new format that is slowly gaining acceptance in the health professions education. Uh, and most of the areas in most universities of the world, even still this SCT is not under use. This format is designed to test the clinical reasoning, just like the key features question, just like the modified essay question. It is based on the principle that the multiple judgment made in these clinical reasoning process can be probed and their concordance with those of a panel of reference expert can be measured. आगे स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से ये स्क्रिप्ट कंकॉर्डेंस टेस्ट जो है ये बाकी टेस्ट से अलग है और इसकी एनाटमी जो है फिर आगे हम व्हाट आर द फोर्थ कंपोनेंट्स ऑफ द ईसीटी. This test has gained fast validity. It has higher validity since its content resembles the task that clinicians do every day, and that's why it should be used for assessing the clinical skills of the patient and the decision making skills of the students. SCT, they are based on short case scenarios followed by related questions that are presented in three parts. And three parts, the first part, which is if you are thinking of, if the student, some information will be shared with the students, and then there will be a question if you are thinking about a diagnosis, about an investigation, about an advice on the basis of these information. But in the second part, then you you first you find some another finding rather than the previous one. So in the third part, now what will be your decision? It means कि पहले जो है आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर आपके जहन में एक आइडिया आएगा, लेकिन अचानक आपको एक और साइन सिम्टम मिल जाती है, रिपोर्ट मिल जाती है, आपको एक इन्वेस्टिगेशन मिल जाती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन का आपके पहले जो सोच थी, आपकी जो पहले डिसीजन थी, उस पर क्या असर होगा? तो तब में फिर क्या होगा कि उसमें आपसे दोबारा क्वेश्चन होगा कि now what you think in the presence of this new information, what will be your decision? और ये जो थर्ड क्वेश्चन है, जो थर्ड it is the main part of this question जिसमें क्वेश्चन किया जाता है और ये क्वेश्चन एक लाइकट स्केल में अंदाज में लाइकट स्केल यूज होती है. लाइकट स्केल का मतलब ये होता है कि जिसमें दोनों तरफ से जो है जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मिडिल, आई डोंट नो, सही है, या देयर पे भी जैसे हम कहते हैं ना कि एक होता है न्यूट्रल और डोंट नो, उसकी एक साइड पे होता है कि एग्री, स्ट्रांगली एग्री, और उसकी अदर साइड पे होता है कि डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री. तो इट मीन कि आप बाइपोलर पे अपोजिट और ऑप्शंस होते हैं, दरमियान में जो है दिस इज न्यूट्रल व्हिच इज कॉमन टू बोथ, व्हिच मोस्टली इज न्यूट्रल, या आई डोंट नो, या both agree and disagree when the person is unable to decide. जैसे for example, this is a question, कुछ information students को दी जाती हैं, फिर पहला part of this SCT में कि if you are thinking of, आपके जहन में एक डिसीजन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, एक एडवाइस आएगी जो आप इस इंफॉर्मेशन जो आपकी ऊपर ये इसके बेस पे होगा, उसके बाद जो है आपको एक न्यू इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सो इस इंफॉर्मेशन के बाद आपकी ये जो सोच थी, आपकी ये जो डिसीजन थी, इसको आप एक्सेप्ट करोगे या इसको आप रिजेक्ट करोगे, आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी. तो यहाँ पर अगर आप देखिए 0 है, +1 +2 -1 -2, दिस इज एक्चुअली नोन एज द लाइकट स्केल.
यहाँ पर जो जीरो है, दैट सिंपल, उसका मतलब ये है कि आपकी जो है मीन neither accepted nor rejected, mean I can't decide, while the -1 that simple mean can't indicated कि आप जो है इस इंफॉर्मेशन के बाद ये वाली थिंकिंग जो डिसीजन मेकिंग थी ये आप नहीं करेंगे। -2 स्ट्रांगली can't indicated, बिल्कुल नहीं करेंगे। +1 की मीन कि आप इसकी इंडिकेशन करते हैं, डजंट मैटर, स्टिल आपकी डिसीजन सेम रहेगी। एंड +2 का मतलब है कि यस, in the presence of the new information again my decision, my जो मेरे decision previously, still it will remain, it still I stand on that. So just read just read this scenario. A 70-year-old woman is referred from her nursing home to the emergency room for an acute shortness of breath. Her past medical history includes type 2 diabetes mellitus, congestive heart failure, and heavy smoking. She was recently given morphine sulfate for the intractable back pain. You are discussing the possibility of a pulmonary embolism. And looking at pulmonary embolism, question 1, ordering a computer tomography या computerized tomography, which is actually CT scan, यानी आप जो है pulmonary embolism है या नहीं है, इसके डायग्नोसिस के लिए आप जो है ऑर्डर दे देते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी के, जो सीटी स्कैन का ऑर्डर आप एडवाइस कर लेते हैं। बट एडवाइस करने के बाद आपको इंफॉर्मेशन आ जाती है कि द पेशेंट क्रिएटिनिन लेवल जो है ये 110 है। सही है। अब इसी क्रिएटिनिन लेवल आप 110 के बाद आपकी जो एडवाइस थी कंप्यूटर टोमोग्राफी की, वो अपनी जगह पर रहेगी। +1 बिल्कुल अपनी जगह पर रहेगी। +2 या -1 +2 या now you can't decide what to do, so that will be 0. Similarly ordering, चलो फिर इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे आप बीइंग हेल्थ केयर मेडिकल प्रोफेशनल, आप मुझसे ज्यादा इस पर आपको पता होगा कि सीटी स्कैन में कुछ ऐसे एजेंट्स दी जाती हैं जो वी कैन से दैट कंट्रास्ट एजेंट दी जाती हैं। और अगर पेशेंट की क्रिएटिनिन लेवल ज्यादा आ रही है, इट मीन उसकी किडनी फंक्शन जो है वो सही नहीं है, तो ये जो कंप्यूटर सीटी स्कैन की जो कंट्रास्ट एजेंट, स्पेसिफिकली द आयोडीन कंटेनिंग, वो एक्यूट किडनी इंजरी जो है वो काज कर सकते हैं। ना हमें पता है कि 120 तक क्रिएटिनिन लेवल जो है ये नॉर्मल रेंज है, तो यहाँ इस केस में अगर आप देखिए उसका लेवल कितना है 110, इट मीन स्टिल द किडनी फंक्शन नॉर्मल, किडनी उसकी फंक्शन नॉर्मल है। तो वी द स्टूडेंट will have can tick the +1 or the +2 because there will be no problem if the patient receive the CT scan when her serum level is 110. सपोज इसको अगर आप उसमें ले ले डिसिलेटर में ले ले लेटर की बजाय, तो वहां पर फिर 1.4 जो है तक नॉर्मल होती है। तो एविडेंस कहती है कि अगर 1.5 या उससे ऊपर होती है तो फिर सीटी स्कैन जो है आयोडीन कंटेनिंग कंट्रास्ट एजेंट जो है ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर इसमें ये है कि आपके एक वीए क्यू लंग स्कैन जो है आप ऑर्डर दे देते हैं। फिर आपको पता चल जाता है कि पेशेंट जो है उसको सीओपीडी भी है, जो सपोज एम्फाइसीमा है उसको। और फिर आप इस एम्फाइसीमा जो पेशेंट है 72-year-old वुमेन जिनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज लाइक ये एम्फाइसीमा है या ब्रोंकाइटिस है, उसके बावजूद आप ये लाइन स्कैन देंगे कि नहीं देंगे। सही। जैसे उसमें होता है ना क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें वेंटिलेशन थोड़ी सी जो है मुश्किल हो जाती है पेशेंट के, उसकी जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है ये ज्यादा हो जाती है, उसकी जो नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट ये थोड़ी सी कम हो जाती हैं, एंड ही हैव टू स्ट्रगल मोर टू इनहेल द ऑक्सीजन इनटू द लंग्स, स्पेसिफिकली इन द एम्फाइसीमा। अब व्हाट इज द वीक्यू लंग स्कैन? इट इज स्कैन इन द न्यूक्लियर मेडिसिन, जिसमें ये देखा जाता है कि हाउ मच अमाउंट of the ventilation which is reached to the alveolus, and how much blood is there surrounding the alveolus in the capillaries, and
अगर व्हाट हैपन इन द सीओपीडी, जिसमें जो कंप्लाइंस ऑफ द लंग जो है ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसका वजह ये है कि उसमें जो डिफरेंस है, जो रेजिस्टेंस है, ये बढ़ जाती है टू द एयर फ्लो, जिसकी वजह से उसकी वेंटिलेशन जो है लिमिट हो जाती है, और ब्लड फ्लो जो है वो तकरीबन उस नार्मल पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस केस में क्या होगा, इसमें मिसमैच हो जाती है, ये वीक मिसमैच हो जाती है, और उसमें वेंटिलेशन लिमिटेड हो जाती है। तो उसमें ऑब्वियसली सीओपीडी के पेशेंट में अगर आप वीक मिस करेंगे तो मिसमैच हो जाएगा, एंड दैट में गिव यू सम बायस्ड रिजल्ट्स एज वेल। तो इसी उसी को देखते हुए भी जो है आप कर सकते हैं। Similarly, the question, there may be a third question which is based on this scenario, ordering a D-dimer test, which जो एक blood में प्रोटीन D-dimer प्रोटीन देखते हैं, लेकिन फिर पता चल जाता है कि केस ऑफ ovarian cancer is also in his her medical record. तो then what will be the hypothesis now? आपका hypothesis जो है, जो आपने पहले सोचा हुआ था, after this information, your hypothesis would be -2, -1, 0, +1, +2. These are in the end the +1, -1, -2, -1, and 0. They have been denoted. What does it want? What does they mean? This is another example. A 25-year-old patient is admitted to the emergency room after a fall from a motorcycle with a direct impact to the pubis. A vital signs were normal. The X-ray reveals a fracture of the pelvis bone with a disjunction of the pubic symphysis. So, if you are thinking of the urethral rupture, the patient also have urethral rupture, and then you came to the conclusion result. There is urethral bleeding as well. So what will be your hypothesis now? Either it will be 0, -1, -2, or +1, +2. So this question, this is actually known as the script concordance test, or also known as the SCT. Inshallah, in the next session, we will discuss the assessment of the clinical skills, assessment of the clinical competencies, and what are the different assessment measures for assessing the clinical competencies of the undergraduate students of the health sciences. Thank you so much to all of you.